The arrest of activist and journalist Tanveer Ahmed has sparked outrage across the Pakistan-occupied region, and a number of demonstrations are being carried out demanding his release. Exiled POK leaders and activists are also holding demonstrations across Europe against this police high-handedness that has become a regular phenomenon in the region. But all this doesn't seem to go well with Pakistani authorities, who recently tried to foil the protest that was organized by POK activists outside the consulate of Pakistan at Bradford in the United Kingdom with due permission. The activists were protesting in a peaceful manner against the illegal detention of Tanveer Ahmed when a few Pakistani citizens started intimidating them by holding a counter-protest. They called them Indian agents and chanted slogans like Kashmir Banega Pakistan. Blaming Pakistan High Commission in London for all this chaos, activists have said that they will not be jolted by this nefarious act of Pakistan and will further intensify their protest. ये सारा जो मंसूबा था ये पाकिस्तानी हाई कमीशन का था, और चूंकि इनकी जो आदत है वो ये है कि जैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, जब भी कोई शख्स या कोई तंजीम जो है या कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब आपने कोई बात करती है तो इसी तरीके से गुंडागर्दी की जाती है, उन लोगों को डराया धमकाया जाता है और उनको खामोश कर दिया जाता है। उनको ये बताने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान नहीं है, आप अपनी लिमिट के अंदर रहकर काम करें। यहाँ पर किसी को भी डराया धमकाया नहीं जाता और किसी को भी किसी प्रोग्राम को, प्रोटेस्ट को या कोई पब्लिक मीटिंग करने से नहीं रोका जा सकता। बल्कि हम तो प्रोटेस्ट मजीद भी करेंगे, ये किसी गलतफहमी में ना रहे, हम मजीद भी प्रोटेस्ट करेंगे और वो प्रोटेस्ट होंगे भी। अगर किसी को हिम्मत है तो वो प्रोटेस्ट रुकवा के देखे। Pakistan's insecurity against Kashmiri activists, both political and social, has manifested in its extrajudicial operations over the years. It has preemptively targeted and suppressed the voices demanding rights and freedom in its illegally occupied territories of POK and Gilgit-Baltistan. Even the newspapers in these regions have been banned for writing something that doesn't suit the interests of Pakistan. In 2017, it ordered the shutdown of Mujadala, largest circulated Urdu daily of Rawalakot in POK, as it carried a survey report that 73% of the people living in the region want independence from Pakistan. This survey was also conducted by Tanveer Ahmed, who had to face a number of problems back then for showing truth to the Pakistani authorities. तो तनवीर अहमद ने ये बड़ी हिम्मत से काम लिया था। जो आजाद कश्मीर के 10 जिला हैं वहां जाकर लोगों से पूछा, 10,000 लोगों से वो जो है ना मिले और वहां से लोगों से जो मालूमात थी वो इकट्ठी की। सर्वे रिपोर्ट जो है और वो जब जारी की गई तो अखबार भी इन्होंने बंद कर दिया हमारे मेहरबानों ने। तो उसमें जो है वो 73% लोगों ने अपना फैसला सुनाया था कि रियासत के लोग जो है ना वो आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। तो जब अखबार ने जनाब वो रिपोर्ट शाया की तो उसके बाद अखबार भी बंद। फिर उस दौरान तनवीर अहमद के साथ बहुत ज़्यादतियां भी की गई, उनको किडनैप किया गया, उनके सामने बहुत सारे मसाइल खड़े किए गए। फिर आज की जो सूरत हाल है आज वो सारी दुनिया के सामने है। This time, Tanveer was on a hunger strike for days and had demanded local authorities to remove Pakistani flags from a public place in POK, failing in which he himself removed the flags. Enraged with this act, Pakistani security forces not just dragged him before coercing into a law enforcement vehicle, but also brutally tortured him. Such incidents have become an everyday event in POK ever since it has been illegally occupied by Pakistan. Anyone who dares to raise his voice against the Pakistani discrimination and human rights violation in the region is subjected to violence, imprisonment, exile, or even death in some cases.